Hope you all are fine and safe at your home and taking good care of yourself. Today is 5th of December 2020, day is Friday, and you're having your science class with me right now. The chapter that we are having in discussion is unit number 6, particles, and the topic that we are going to talk about is expansion and contraction. It is given on page number 89 of your reading book, right? Before we go directly to the today's topic, let us all revise about the previous topic कि हमने last time क्या पढ़ा था. We have talked about the particles. हमने atoms की बात की थी, molecules की बात की थी, compounds की बात की थी. Atoms are the who will tell me like what are atoms? Yes, Amna, can you tell like what are atoms? Very right. Atoms are the tiniest particles that we are not able to see through our naked eyes. They are so small in size, इतने छोटे होते हैं साइज में कि हम अपनी like naked eyes से उसको देख ही नहीं सकते हैं. We need an electron microscope to see them, to study about them. Then हमने atoms में और tiniest particles की बात की जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं. सो पार्टिकल्स आर द टाइनीस्ट थिंग्स दैट वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू आवर आइज. दे आर सो टाइनी इन साइज, ठीक है, एंड दे आर ऑल अराउंड अस. यू नो, मैटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स जिसमें हम अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स वी नेम दैट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं and they are having no space in between them, so we call them they are hard and they are solid, right? And if they have little bit of space in between them and they can move around, we call them liquid. And if they have enough room to enough of the space in between them, like much amount of space, so we call them gas molecules or gas particles. I'm just going to draw the arrangement on the board so that it will be more clear to you. For example, we are considering it, the balls that I am just making on the board, we are considering them particles, right? See, अब जैसे मैं इनकी arrangement board पर draw कर रही हूँ, I'm not leaving any space between them. बिल्कुल भी space नहीं है. They are very tightly packed. So they are very tightly packed, so they are not able to move. Solids में भी ऐसे ही होता है. Why the solid objects are hard? Because उसमें जो particles हैं, जो atoms हैं, जो molecules हैं, they are very tightly packed. See, इनमें कोई भी space नहीं है. अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ को fix करना चाहूँ तो it will not be possible because there is no space. So this is the arrangement of the solid particles, right? If we talk about the liquid, then see, लिक्विड में मैंने स्पेस रखी है. देखें, there is a space between the liquid particle, so they are able to move from this to this. अब ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे इजीली फिट हो सकता है, ठीक है. So in liquid, atoms or particles have space between them, so they can move around, right? Now let's talk about the gas. Now if we talk about the gas molecules, so they have enough amount of space between them. See, मैंने कितनी ज़्यादा space रखी है gas molecules में, so they can very easily move around. Because इसके जो particles हैं इनके center में they are having a very good amount of space, so they can easily move around from one place to other. ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा जब आप कभी परफ्यूम या बॉडी परफ्यूम या आप स्प्रेज वगैरह करते हैं, वी जस्ट डू इट एट वन कॉर्नर एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स इट जस्ट स्प्रेड ऑल अराउंड इन द रूम. पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. इवन अगर किसी ने परफ्यूम लगाई एंड दैट पर्सन इज जस्ट गोइंग बाय आवर साइड, तो जहाँ जहाँ से गुजर रहे होते हैं वहाँ से खुशबू आ रही होती है. वाई सो? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, सो दे जस्ट मूव अराउंड. बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं. दैट्स वाई वी आर एबल टू स्मेल द थिंग्स अराउंड अस. So that was the revision about the arrangement of the particles in different states of matter in solid, liquid and gas. Now come to our main topic, that is expansion and contraction. Expansion, as I like already used to say to you कि most of the words are having the meaning inside them. उनका concept उन words के अंदर ही होता है. For example, expansion,
come from expand. expand का मतलब होता है किसी चीज़ का फैल जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है. सो एक्सपेंशन इज द गेटिंग बिगर इन साइज, किसी चीज़ का भी साइज में बड़ा हो जाना, ठीक है. एंड कॉन्ट्रैक्शन इज टू लेसर इन साइज, लाइक लेसन इन साइज के साइज में छोटा हो जाना, ठीक है. सो टू लेट यू नो दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम ये देखेंगे कि हाउ द थिंग एक्सपैंड एंड हाउ दे कॉन्ट्रैक्ट. अभी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस. अब हम गैस से रिलेट करके बात करें बिकॉज यही आई फील कि ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको अगर हम करेंगे तो कॉन्सेप्ट ईजिली आपको आ जाएगा. हम गैसेस में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को देखेंगे. आई हैव टोल्ड यू एक्सपेंशन का मीनिंग होता है टू इंक्रीज इन साइज, इन कॉन्ट्रैक्शन का टू अगेन कम इन टू स्मॉलर साइज, टू शॉर्टर इन साइज, साइज में छोटा हो जाना, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, श्रिंक हो जाना, ठीक है. सो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है. हाउ इट डिपेंड ऑन प्रोवाइडिंग द एनर्जी. हम एनर्जी प्रोवाइड करके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड कर सकते हैं. हाउ वी कैन प्रोवाइड द एनर्जी डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. अगर हम सॉलिड को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं व्हाट वी विल डू, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव दैम. इनको मूव करना बहुत डिफिकल्ट है. व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड दैम एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. हम हीट इनको प्रोवाइड करेंगे एंड दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग. जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की, व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ द हीट दे विल हैव अ स्पेस इन बिटवीन दैम. मॉलिक्यूल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, इनके सेंटर में स्पेस आ जाएगी और दे विल स्टार्ट मेल्टिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आइस है, बर्फ़ है, उसको मेल्ट करेंगे. जब वो सॉलिड फॉर्म में होती है तो दैट इज़ आइस. जब उसको हम मेल्टिंग फॉर्म में लेके आएंगे तो वो पहले वाटर में चेंज होगी, दैन इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग और वो इवेपोरेट बन स्टीम की फॉर्म में आ जाएगी जिसको हम गैस कह सकते हैं, ठीक है. तो by providing heat or temperature we can let the object expand and contract. Expand to increase in size and contract to decrease in size. Again come back into the shorter form, ठीक है. Right, अब हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. For experiment you need a plastic bottle, any bottle of small size, and you need a balloon of small size, and you need a hot boiling water and a cold water, chilled water आपको चाहिए. What you are supposed to do, आपने इस बलून को इसके कैप के ऊपर टाई कर देना, just like I'm going to do it. मैंने बलून को इसके ऊपर बॉटल के ऊपर लगा दी है. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आई विल पुट द हॉट बॉइलिंग वाटर इनटू अ बाउल. मैं इसमें पानी डाल रही हूँ. बी केयरफुल while you are doing that experiment, and I'll put the bottle into it and see what's happening. The balloon is blowing up. I have just placed a boiled water into the bowl and a bottle and see it's just blowing up. What's happening? इस बलून के अंदर और बॉटल के अंदर जो एयर थी, पहले तो टेम्परेचर नॉर्मल था, सो इट वाज जस्ट सेटल्ड डाउन, ठीक है. जैसे ही मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, व्हाट हैज़ हैपन, हीट से उसको एनर्जी मिली एंड द मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग. जब मूव करना था दे डोंट फाइंड एनी स्पेस टू गो आउटसाइड बिकॉज बलून जो है वो इसके ऊपर टाइट मैंने किया हुआ था. कोई एयर को बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, सो इट जस्ट ऑल कलेक्टेड ओवर हेयर. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अपने नेक्स्ट बाउल में चिल्ड वाटर डालूंगी दैट इज़ वेरी फ्रीज्ड. इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था एंड इट्स वेरी कोल्ड. अब यही बॉटल हम चिल्ड वाटर में डालते हैं. सी व्हाट विल हैपन, आप देख रहे हो द साइज ऑफ द बलून इज गेटिंग शॉर्टर और वो सब एयर एक सेकेंड में रिलीज हो गई है एंड द बलून इज नाउ अगेन इनटू इट्स शेप, ठीक है. So this is how expansion and contraction happen. See, balloon is just all the air is just settled down. heat की वजह से इसको एनर्जी मिली थी and balloon start blowing. अब जैसे मैंने इसको cool down किया, all the gas is again settled down and see
the balloon is all just going inside because water bahut chilled tha and the air is just all settled down, right? So this